Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session, as we are continuing with the unit of human reproductive system, so here we will be continuing with the next session of this unit where we'll be talking about the female reproductive system. Okay, so focusing on the female reproductive system, so this is basically the overview or the major organs or major parts of the female reproductive system. So we have the uterus, then we have the fallopian tube, then we have the ovary, then we have the cervix of the uterus, and then we have the vagina. I think this diagram is something which I have already discussed in brief in one of the previous sessions of human reproductive system. So anyways, this view is basically the front view. And if we talk about the lateral view of the female reproductive system, then what are the important organs that we need to focus on? So firstly, we have the urinary bladder, then we have the urethra, then we have the uterus. Now, let me remind you, urinary bladder and urethra are actually not a part of the female reproductive system. In the lateral view, they are coming. That's why I have marked these organs, because these are actually part of the female excretory system. Okay. Uterus and cervix are obviously part of the female reproductive system, and cervix, let me remind you, cervix is not a different organ. It is a part of the uterus only. Okay, then we have the ovaries over here, then we have the fallopian tube, and then we have the vagina, and also rectum, which is again not a part of the female reproductive system. So if we talk about the female reproductive system, what are the different components that we have? So there will be a pair of ovaries. So just like male, पेयर ऑफ टेस्टिस था वहां पे, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी हो जाएगा. फिर होगा पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो दोनों ओवरी के लिए दोनों तरफ दोनों फैलोपियन ट्यूब भी रहेगा. उसके साथ एक यूटेरस रहेगा एंड द वेजाइना विच इज द द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था पेनिस, वैसे फीमेल्स में हो जाएगा वेजाइना. ओके, एंड ऑल्सो another thing that we need to remember over here, that is the external genitalia is located in the pelvic region, exactly like the male reproductive system. So these parts, along with a pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. Okay, so let's first begin with ovary, जो कि ovulation के लिए एक बहुत ही important organ है. सो ओवरीज दोनों होंगे, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूटेरस. जस्ट लाइक मेल में पेनिस के दोनों तरफ दोनों टेस्टिस था, फीमेल्स में यूटेरस के दोनों तरफ दो ओवरीज होगा. ओके, सो दीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. जैसे कि टेस्टिस था प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, वैसे ही ओवरी हो जाएगा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. And they will be producing the female gametes and the steroid hormones. Steroid hormones मतलब sex hormones, जो कि 2 types का होता है फीमेल में, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. और फीमेल गैमेट्स मतलब द ओवम. ओके, जस्ट लाइक मेल में स्पर्म है, फीमेल्स में होगा ओवम. ओके, सो ओवम इज बेसिकली द सिंगुलर फॉर्म, ओवा इज द प्लूरल फॉर्म. और ओवरियन हार्मोन्स में क्या आएगा, वही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. So paired ovaries, they are being highlighted in this image as you can see. So they are located one on each side of the lower abdomen. So this is basically another view of the ovaries. So ovary में क्या होगा कि how will the ovary be connected with the wall of the abdominal cavity? By the double layered fold of peritoneum. Peritoneal layer हम male reproductive system में भी देखे थे. तो यहाँ पे भी पेरिटोनियम है जिसका नाम होगा मेसोवेरियम, जो कि ओवरी को कनेक्ट करेगा विद द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. तो ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और इसके साथ ओवरी को जुड़ेगा कौन, द मेसोवेरियम. सो बेसिकली दिस इज द मेसोवेरियम दैट वी हैव. ओके ओके, तो यहाँ पे यूटेरस का कुछ पार्ट्स दिखाया है, जैसे कि दिस इज द बॉडी ऑफ द यूटेरस, दिस इज द फंडस यानी कि एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूटेरस, और लोअर मोस्ट पोर्शन अगर देखेंगे वो होगा सर्विक्स, जो कि वजाइना वजाइना का ओपनिंग के एकदम, नॉट ओपनिंग मतलब सर्विक्स के एकदम तुरंत बाद वजाइना स्टार्ट हो जाती है. ओके, so the ovaries are covered on the outside by a layer of simple cuboidal epithelium which is called the germinal epithelium. Germinal epithelium जो था वो male reproductive system में भी था, isn't it, जो कि scrotum को cover कर रहा था. तो यहाँ पे भी सेम चीज है जिसको हम germinal या फिर ovarian epithelium बोलेंगे. ओके, सो इसमें भी क्या होता है, visceral peritoneum होता है which envelops the ovaries. ओके,
So underneath this germinal epithelium, there is a dense connective tissue capsule which is known as the tunica albuginea. तो ये चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी था, isn't it? Tunica vaginalis and tunica albuginea. तो यहाँ पे भी tunica albuginea है. और अगर ओवरियन का जो स्ट्रोमा है, ओवरी का जो स्ट्रोमा है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे. व्हाट आर दे? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो आउटर पार्ट होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको हम मेडुला बोलेंगे. ठीक है, तो ये जो व्यू है ये आउटर कॉर्टेक्स का व्यू है. सो अगर कॉर्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे, सॉरी, इस व्यू में कॉर्टेक्स का भी पोर्शन है, मेडुला का भी पोर्शन है. ओके, दिस इज एक्चुअली द एंटायर व्यू ऑफ अ सिंगल ओवरी. सो कॉर्टेक्स जो है इट appears more dense and granular due to the presence of ovarian follicles in various stages of development. अगर हम oogenesis देखेंगे तो उसमें just like spermatogenesis डिफरेंट स्टेजेस आता है. प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर पोलर बॉडी आता है. उसके बाद जाके हमारा जो ओवर है, जो मेन चीज हमें चाहिए, द द जर्म सेल, मतलब द व्हाट टू से, द द जर्म सेल जस्ट लाइक स्पर्म व्हिच विल गो एंड फ्यूज विद द स्पर्म. तो ये जो सारे डिफरेंट स्टेजेस है वो सारा होगा कॉर्टेक्स में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा डेंस है एंड ग्रैन्युलर है. और मेडुला जो है इट इज नथिंग बट अ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद abundant blood vessels, lymphatic vessels and nerve fibers. And the follicles are formed by the infolding of the germinal epithelium. What are follicles? Follicles are nothing but cells जो कि जाके finally हमारा ova बनाएगा. Okay. Now one important MCQ that I want to share with you. One pair of ovaries is located. Let's see the options. One on each side of the lower abdomen. Number 2 in pelvic region. Number 3 both 1 and 2. And number 4 will be in upper abdomen. So the right option will be both 1 and 2. Pelvic region में तो होना ही है, और one on each side of the lower abdomen, isn't it? Each side of the uterus. So एक left side में होगा, एक right side में होगा. So both options A and B, or rather both options 1 and 2 will be correct. Okay. Now moving on to the oviducts. So oviducts मतलब fallopian tube. Fallopian tube का दूसरा नाम है oviduct, जो कि एक बहुत ही important part है of the female reproductive system. Okay. और ये भी is present in a pair, मतलब दो दो होता है. ठीक है, तो each fallopian tube will extend from the periphery of each ovary to the uterus. अगर हम देखेंगे ओवरी के एकदम ऊपर से, and fallopian tube has 3 parts. These are things which I have already mentioned in previous sessions. ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे infundibulum, फिर आएगा ampulla, फिर आएगा isthmus. ओके, और infundibulum एंड करेगा with finger like projections और thread like projections, जो कि ओवरी को पकड़ के रखेगा और उसके साथ साथ ओवरी से जब भी ओवर रिलीज होगा वो उसको कैप्चर करेगा. ओके, सो दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब. यहाँ पे जो लेबलिंग जहाँ पे किया है दैट इज बेसिकली द एम्प्यूला पार्ट. ठीक है, तो ये एम्प्यूला पार्ट होगा, यहाँ पे होगा isthmus पार्ट एंड दिस विल बी द infundibulum. Okay, and this is obviously the uterus. So it has 3 parts exactly जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. Infundibulum, it is the funnel shaped part. The edges of the infundibulum possesses finger-like projections which are known as the fimbriae. These are some things which I have already talked about in details. Then we have the ampulla, जो कि middle wider part होगा, तो ये वाला part थोड़ा चौड़ा है इसलिए wider part बोल रहा है. और third part होगा isthmus, which will be the site of fertilization. So it is the narrow last part जो कि डायरेक्टली यूटरस में जाके ओपन हो रहा है. ओके, सो इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. विच साइट और विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, रादर द isthmus पार्ट. ओके, तो यहाँ पे जो GIF टाइप का दिखा रहा है, देखो वही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगेन दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, कि यहाँ से जो है थ्रू द वजाइना द स्पर्म विल बी ट्रेवलिंग अपवर्ड्स इनटू द यूटरस, और यहाँ से जो है ओवर जाके ट्रेवल करेगा और यहाँ पे दोनों का मिलन होगा. दे विल फ्यूज विद ईच अदर एंड हेंस दैट विल बी द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, सो बेसिकली एम्प्यूला isthmus जंक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में isthmus है तो यू विल टेक isthmus. ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में देख रहे हो कि isthmus नहीं है, एम्प्यूला isthmus जंक्शन है, देन यू विल टेक एम्प्यूला isthmus जंक्शन एज द राइट ऑप्शन. ओके, बट आइडियली इट इज द isthmus.
So it conducts the ovum or zygote towards the uterus by peristalsis. So what is peristalsis? Peristalsis is basically muscular movement. So uterus is an organ, so obviously it will be containing muscles of its own, isn't it? So peristalsis के सहारे ये जो ovum है वो आसानी से uterus के तरफ travel करता है, ठीक है? And peristalsis is also a very important movement as far as our GI tract यानी कि gastrointestinal tract is concerned. Okay, so वहाँ पे भी okay. So moving on to the next slide. So here we will be talking about the fimbriae and the ovarian fimbriae. Okay. So the fallopian tube is attached to the abdominal wall by a peritoneal fold जिसका नाम है mesosulfins. Okay. So see, this is basically nothing but a peritoneal fold जिसके जरिए fallopian tube attached रहता है to the abdominal wall. Now moving on to the next important part or next important organ of the female reproductive system, that is the uterus, which is also known as womb. Okay, so this is how the uterus looks like. So it is a single large muscular and highly vascular inverted pear shaped. Okay, so pear का shape जैसा होगा and it will be inverted मतलब उल्टा होगा. Highly vascular means rich in blood supply बहुत ही ज़्यादा होगा. And obviously muscular, full of muscles क्योंकि uterus का main काम है contraction during parturition, during delivery, natural delivery और vaginal delivery. Okay, और large word जो यहाँ पे यूज किया है ये थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एक्चुअली जो नॉर्मल यूटरस होता है, नॉर्मल यूटरस मतलब यूटरस ऑफ अ लेडी हु इज नॉट प्रेग्नेंट. ओके, उनका यूटरस अगर देखेंगे तो इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली द साइज ऑफ अ वॉलनट जितना बड़ा होता है, ठीक है? सो यू कैन इमेजिन इट्स एक्चुअली अ वेरी टाइनी ऑर्गन व्हेन इट इज नॉट हार्बरिंग अ बेबी. लेकिन जब वो बच्चा हर्बर कर रहा है, व्हेन द लेडी इज बिकमिंग प्रेग्नेंट, just imagine how much bigger this organ can become, isn't it? पेट कितना बड़ा होता है, कितना फूलता है, वो तो आइडिया मोर और लेस सबको है, isn't it? सबने देखा है कभी ना कभी या फिर मूवीज में तो देखा ही है. तो वो छोटू सा वॉलनट जैसा ऑर्गन कितना बड़ा हो सकता है, मीन्स इट्स हाउ मच स्ट्रेचेबल, हाउ मच इलास्टिक इट इज. एंड व्हाई इट इज दैट मच स्ट्रेचेबल एंड इलास्टिक? ओनली बिकॉज इट इज हाईली मस्क्यूलर, बहुत सारे मसल्स है तो वो रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है? It is present in the pelvis between the bladder and the rectum. तो अगर लोकेशन देखेंगे, एनाटॉमिकल लोकेशन अगर देखेंगे यूटरस का, तो इट्स लोकेटेड बिटवीन द ब्लडर एंड द रेक्टम. So this is the rectum and this is the bladder. Okay. Okay. So this is basically how the uterus looks like. Okay. So it is attached to the abdominal wall by the peritoneal fold called the mesometrium. So mesometrium जो है, that is the name of the peritoneal fold जो कि यूटरस को अटैच करके रखा है to the abdominal wall. Okay. Okay, so this is basically the fundus of the uterus, the topmost portion of the uterus. This is the body of the uterus. Body of the uterus में क्या रहेगा? Uterine cavity रहेगा जो कि बच्चा को हर्बर करेगा. In the uterine cavity only the placenta and all will be formed and inside it the baby will be growing. Okay, and this is the cervical canal or rather the cervix of the uterus which will be opening directly into the vagina. So the lower narrow part through which the uterus opens into the vagina will be the cervix and the cavity of the cervix is known as the cervical canal. तो ये जो cavity रहेगा cervix का जो कि obviously narrow होगा than the body of the uterus. मतलब uterine cavity के साथ अगर cervical cavity या cervical canal को compare करेंगे तो cervical canal काफी narrow होगा. Okay. So this is exactly how it looks like. So the cervical canal along with the vagina will be forming the birth canal. Okay, birth canal only when we are talking about vaginal delivery or normal delivery. Okay, now moving on to another very important concept regarding the uterus, that is the three layers of the uterus. The uterine wall का अगर हम बात करेंगे तो 3 layers से वो बना होगा. Okay, what are they? The perimetrium, the myometrium and the endometrium. Okay, so as you can see in this diagram also. So perimetrium मतलब वो बाहर के तरफ हो. So it is the external layer. Okay. So it is the external membrane and it is also very thin. बहुत पतला होता है. Main जो सबसे मोटा वाला layer होता है वो है myometrium. Myo means muscle and metrium means layer.
सो मायोमेट्रियम में क्या होगा, देयर विल बी लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स. ओके, सो पूरा जैसे मैं बोल रही थी कि यूटेरस जो है वो हाईली मस्क्यूलर एंड हाईली वैस्क्यूलर है, तो वो मसल वाला पार्ट कहाँ पे होगा, मायोमेट्रियम में. सो सी दिस इज द मायोमेट्रियम. डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि इट्स फुल ऑफ मसल्स. ओके, व्हाट टाइप ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स. और एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होगा, एंडो मतलब इनर मोस्ट, तो एकदम अंदर की तरफ होगा. सो इट विल बी द लेयर ऑफ हाईली वैस्क्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. सो सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई वाला पार्ट होगा वो हमारा एंडोमेट्रियम में होगा, एंड उसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे. सो दिस इज बेसिकली द एंडोमेट्रियम. ओके, okay, so the endometrium will undergo cyclic changes during menstrual cycle. This is again another very important concept. Menstrual cycle क्या है, इसके बारे में I have given the basic overview in one of the previous sessions of this human reproductive system. I think in the first session of human reproductive system only. So menstrual cycle में basically क्या होता है कि जो endometrium है, मतलब कि जो इनरमोस्ट लेयर है यूटरस का, वो थिन होता है, फिर थिक होता है, फिर थिन होता है, फिर थिक होता है. ठीक है, सो थिकनिंग कब होगा, व्हेन द यूटरस इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर इम्प्लांटिंग और फॉर हार्बरिंग अ बेबी. क्योंकि बेबी को उसको रखने के लिए 9 महीने तक रखना है, इजंट इट. तो उस बेबी को रखने के लिए इट हैज टू बी थिक, है ना. एंडोमेट्रियम का जो वॉल होगा उसको थिक होना पड़ेगा, तभी वो जाके बेबी को रख पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो बेबी बड़ा होगा, ग्रो करेगा थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, इजंट इट. सो जब उसको सिग्नल मिलेगा कि अभी बेबी आ सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब वो उसको खुद को थिक करने लगेगा. तो ये सिग्नल उसको कब मिलेगा, ऑब्वियसली व्हेन देयर विल बी ओव्यूलेशन, इजंट इट. ओवरी जब ओवम प्रोड्यूस करेगा तब यूटेरस के पास सिग्नल आएगा कि अभी ओवम प्रोड्यूस हो चुका है, तो उसके साथ स्पर्म का मिलन हो सकता है, और अगर वो मिलन सक्सेसफुल होगा तो तुमको बेबी हर्बर करना पड़ेगा. तो तुम खुद को मोटा बनाते जाओ. ठीक है, और वो उल्टा कब होगा, कब वो अपने आप को थिन बनाएगा, जब उसके पास ये सिग्नल जाएगा कि अभी बेबी आने का कोई चांसेस नहीं है, तो अभी तुम अपने आप को थिन बना सकते हो, मोटे बनाने का कोई जरूरत नहीं है. तो वो सिग्नल कब जाएगा, जब ओव्यूलेशन हो चुका है लेकिन कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई भी मेटिंग, कोई भी इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तब यूटेरस के पास ये सिग्नल जाएगा कि अभी बेबी आने का कोई चांसेस नहीं है. ओके, सो दैट इज बेसिकली द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. तब एंडोमेट्रियम जो है वो शेड करेगा, और शेड करने की वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो ब्लड है, वो बाहर निकलेगा, जिसको हम एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं. ओके, सो द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पर्चुरेशन. और मायोमेट्रियम जो है उसका मेन काम यही है कि इट्स फुल ऑफ मसल्स, सो इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग पर्चुरेशन, पर्टिकुलरली इफ इट्स अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी. Next, I would just like to share an important MCQ with you. The wider part of oviduct into which infundibulum opens is very easy answer. The right option will be ampulla. क्योंकि infundibulum के बाद next आता है ampulla and उसके बाद आता है isthmus. Okay. Now talking about the vagina, which is the birth canal. तो cervix और vagina दोनों मिला के हमारा birth canal ready करेगा. Okay. So vagina is the large median fibromuscular tube which extends from the cervix to the vestibule, which is the space between the labia minora. क्या है labia minora, labia majora? We will be talking about in the upcoming slides. So this vagina is lined by non-keratinous stratified squamous epithelium. So see, stratified मतलब थोड़ा layer ridgy appearance होगा, ridge type structure रहेगा. Okay, as we can make out from this diagram also. Okay, so it's basically containing stratified squamous epithelium. Okay, so ये जो है this will be the vaginal orifice, means basically the opening, ultimately जहाँ से baby को निकालना है. Okay, so it's a highly vascular structure and it opens into the vestibule through the vaginal orifice. Again highly vascular means blood supply बहुत ही ज़्यादा होगा. The vaginal orifice is partially covered by a mucous membrane called hymen. Okay, and ये hymen जो है, it is not necessarily present in each and every woman or lady. It can be partially formed, or in some cases it can be absent also right since birth. Okay, because regarding this hymen, there are many misconceptions regarding the virginity of a female.
Okay, if the hymen is present, if the hymen is intact, that means the girl is virgin, she has never indulged in any kind of sexual intercourse in her life before. And if the hymen is not there, if the hymen is absent, or if the hymen is partially formed, that means the girl is non-virgin, means she has indulged in sexual activity or intercourse. Okay, but this concept is actually not right. Okay, it is a myth, क्योंकि in many females it happens that the hymen is either absent or maybe it is partially formed right since birth, or it may also happen because many females are very much physically active, or particularly the sports persons, the athletes. Okay, in those cases what happens, the hymen tears off during exercise or during those physical activities. Okay, so hymen means presence or absence of hymen has nothing to do with virginity. Okay, so this is an important concept that you need to know as biological science students. Okay, so moving on to the vestibule. So the vestibule is a space with two apertures. So one will be the upper urethral orifice, that is the opening of the urethra, jahan se urine will come out, and the other will be the lower vaginal orifice, which will be the opening of vagina. Okay, jahan se the menstrual blood will come out, and in case of delivery the baby will come out. Okay, so the two openings are different, unlike in males में एक ही opening था, that is the the orifice of the penis, जहाँ से urine भी निकलेगा और sperm भी निकलेगा. Okay, but in case of females the two openings are different. Okay, so एक होगा vaginal orifice, एक होगा urethral orifice, as you can see. Okay, so the vestibule is bound by two pairs of fleshy folds of tissue which are known as the labia minora and the labia majora. Okay, so labia minora जो होगा, minora means small, it's coming from the word minor, minor means small, और majora means it's coming from the word major, means the larger one. Okay, so labia minora जो होगा वो अंदर की तरफ रहेगा और वो छोटा होगा, और लेबिया मेजोरा जो होगा वो बाहर की तरफ होगा and it will be larger. Okay, so see, these are basically the labelings. So see, labia minora will be the smaller one and on the inner side, and labia majora will be on the outer side and it will be the greater one or the larger one. Now talking about something called clitoris, it is a sensitive erectile structure. So just like in case of male, the erectile structure will be the penis, which is also the primary sexual organ. Okay. Similarly, in case of females also, we have a erectile structure, which is the clitoris. It is not the primary sex organ. The primary sex organ in case of females will be the vagina. But the erectile structure, just like penis, is also present in case of females, and that is the clitoris. Okay, so see, this is basically how the clitoris looks like. It's a very tiny structure. Okay, but it is sensitive and it can be erectile. Why sensitive? Because the nerve supply is very high. Okay, always remember that any sensitive part of our body, कोई भी sensitive part ले लो, whether it's a female body or a male body, sensitive मतलब ही उसमें nerve supply बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो कोई भी sensation बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे. Okay, so it lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral orifice. See, so this is the urethral orifice, तो उसके ऊपर होगा junction of the two labia minora. ओके, सो इस तरफ एक लैबिया माइनोरा है, मतलब उस तरफ भी एक लैबिया माइनोरा होगा, तो दोनों के बीच में होगा. एंड इट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ मेल्स एज बोथ आर सपोर्टेड बाय कॉर्पोरा कैवर्नोसा इंटरनल. ओके, तो क्यों वो होमोलोगस होगा? एक तो पेनिस की तरह ये भी इरेक्टाइल है, और दूसरा होगा पेनिस में जैसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा था अलोंग विद कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, यहाँ पे भी क्लिटोरस में भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा. ओके, and another thing that the female reproductive system has is the mons pubis, which is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair present above the labia majora. Okay, so labia majora के ठीक ऊपर की तरफ ये होगा mons pubis, जो कि एक fatty connective tissue layer होगा. Okay, now coming to the accessory reproductive glands. तो accessory reproductive glands में जो सबसे important होगा वो हम सबको पता है, that is the mammary glands or the breasts. उसके साथ साथ क्या क्या होगा? Bartholin's or greater vestibular glands, Skin's gland or lesser vestibular glands, and the mammary glands. तो mammary glands को छोड़ के और भी दो accessory glands होंगे. Okay, so let's
फर्स्ट फोकस ऑन बर्थोलिन्स और द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. तो ये कहाँ पे होंगे? सो दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड्स, मतलब कि दो दो होंगे. ठीक जैसे मेल्स में सेमिनल वेसिकल्स था और कॉर्पस ग्लैंड था, दो दो पेयर में, वैसे यहाँ पे भी. एंड दे आर स्लाइटली लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस. तो वेजाइनल ओरिफिस के लेफ्ट साइड में एक होगा, राइट साइड में एक हो गया दो. And they will secrete mucus to lubricate the vagina, and lubrication of vagina is something very important. It's required obviously during natural delivery or vaginal delivery. It's also required during sexual intercourse, and it's also required to protect the vagina from any type of foreign pathogens. Okay, and they are homologous to the bulbourethral glands of the male reproductive system. So male reproductive system में जो bulbourethral glands हम देखे थे जो कि पेयर में था, उसका homologous होगा this greater accessory glands. Okay, next moving on to Skene's glands or lesser vestibular glands. So these are located on the anterior wall of the vagina around the lower end of the urethra. Lower end of the urethra मतलब cervix. Cervix के अगल बगल में होंगे, and they will secrete a lubricating fluid when stimulated. So basically lubrication of the vagina, यही होगा function. And they will be homologous to the prostate gland of the male. Prostate gland जो कि एक ही है, not in pair. Okay. And last but not the least, we will be talking about the mammary glands, very important part of the female reproductive system, because they are the organs that are responsible to feed the newborn child. And breast milk is something which is very much important for the newborn child, for to develop the immunity of the newborn child. And it's also believed that feeding means lactation, and feeding your child with breast milk actually develops the connection between the mother and the baby. Okay, the emotional connection or the bonding. Okay, so there are various different importance, various different perspectives of lactation or breast milk feeding. So mammary glands का क्या क्या components होंगे? First होगा fat. Fat is the major component of mammary gland because it's nothing but a ball of fat. ओके उसमें क्या होगा? mammary lobule होगा, mammary tubule होगा, mammary duct होगा, mammary ampulla होगा and lactiferous duct होगा. ओके सो mammary duct जो है उसी से बेसिकली जो breast milk है it will be traveling and ultimately it will be coming out through the lactiferous gland and then through the nipple, through the opening of the nipple rather. Okay, so functional mammary glands will be characteristic of all female mammals, not only humans but all mammals. Okay, mammals का definition ही है कि जो अपना breast milk produce कर सकता है. Okay, these are paired structures that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobules. Okay, तो ये जो mammary lobules है, ये अगर count करेंगे, for example, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So around 15 to 20 mammary lobes will be present in each of the breasts. Each mammary lobe will be consisting of clusters of cells called alveoli. जैसे lungs में होता है alveoli, वैसे mammary gland में भी breast में भी होगा. Okay, and these cells of alveoli will be responsible to secrete milk, which is stored in the lumens of the alveoli. And these alveoli will open into the mammary tubule. Mammary tubules of each lobe will join to form the mammary duct. So basically it's like a channel kind of thing. Mammary lobule जाके mammary tubule बनाएगा, mammary tubule जाके mammary duct बनाएगा. And several of mammary ducts will again join together to form the mammary ampulla. उसके बाद mammary ampulla क्या होगा? It will be directly connected with the lactiferous tubule in the nipple. Lactiferous tubule कहाँ पे रहता है? In the nipple, through which the milk will be sucked out by the baby. So opening जो है वो nipple में होता है and that is directly connected with the lactiferous duct. Okay. So basically the pathway is given over here. So mammary lobe से mammary tubules, फिर वहां से जाएगा mammary duct में, फिर वहां से जाएगा mammary ampulla में, mammary ampulla से जाएगा lactiferous duct में, and then finally through the nipple. Okay. A very important MCQ that I would like to share is birth canal is formed by vagina and cervical canal, vagina and uterus, fallopian tube and vagina, and last option is fallopian tube and cervix. Okay, so very easy options, nothing to get confused. The right answer will be vagina and cervical canal, that is option 1.
Okay, so I think that's it regarding the female reproductive system. We will be soon moving on to the next session of this unit of human reproductive system. Till then, stay tuned. Thank you and goodbye.